Hello and welcome back. What is harmonic wave? Write it down. A wave generated by simple harmonic oscillator is known as harmonic or sinusoidal wave. The sinusoidal means both cos function or sine function. Cos or sine function is sinusoidal function. You can take combination of cos and sine also. So, harmonic wave is a wave generated by object undergoing simple harmonic motion. Object undergoing simple harmonic motion is simply known as simple harmonic oscillator. Now, so harmonic wave किसको कहते हैं? जो वेव जनरेट हो रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? कोई भी पार्टिकल अगर उसका मोशन SHM है तो उसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हार्मोनिक वेव इज function of two variables. To mathematically describe a traveling wave or traveling harmonic wave for that matter, we need a function which is function of two variables, position and time. हार्मोनिक फंक्शन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक फंक्शन लेंगे जो दो वेरिएबल का फंक्शन होगा, पोजीशन एज वेल एज टाइम. सो एज जो हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिकल मॉडल में कि कोई भी वेव अगर है तो वो फंक्शन होता है दो वेरिएबल का, और यहाँ दो वेरिएबल है x एंड t. नाउ द नेचर ऑफ फंक्शन शुड बी सच दैट एट गिवन टाइम function should give shape of wave and फंक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए कि किसी टाइम t पे इस फंक्शन से वेव का क्या शेप है वो इंफॉर्मेशन मिल सके. एंड एट गिवन पोजीशन, because it is function of two variables, so at given time, if you fix the time, it should give shape of that wave, and at given position, function should describe motion of constituent of medium in which that wave is propagating. जो दूसरा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए वो है अगर पोजीशन फिक्स करते हैं तो इट शुड गिव मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में वो वेव प्रोपगेट कर रहा है. So we need a function which is function of two variables such that at given time the function should give you shape of wave, and at given position or at given location function should describe motion of constituent of medium at that location. So for harmonic wave, if we consider a transverse wave, you know meaning of transverse wave, yxt is a sine
kx minus omega t plus phi. Write it down. This is your traveling harmonic wave, or simply harmonic or sinusoidal wave. It is not necessary to use term traveling wave. A wave has to travel. When we use term wave, what we mean, it is traveling. But we will discuss about that standing wave later in the course, because of you have another type of wave known as standing wave. That's why in physics we also use this term traveling wave or progressive wave. So wave, traveling wave, progressive wave is same. Standing wave is something very different. Mathematically हार्मोनिक वेव या साइनोसॉइडल वेव को कैसे लिखते हैं? वाई एक्स टी इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई. इसके लिए ये वर्ड ट्रैवलिंग भी यूज़ करते हैं, बट वेव का मतलब ही होता है उसको ट्रैवल करना है. बट एक और वेव हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव. तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए वी ऑल्सो यूज टर्म ट्रैवलिंग वेव. तो वेव या ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव, इस तीनों का मतलब एक ही है. और अगर ये साइन या कॉस के टर्म में लिखा हुआ है तो कैसा वेव होगा? हार्मोनिक या साइनोसॉइडल वेव. नाउ व्हाट इज दिस वाई? वाई इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम. Y is displacement of constituent of medium, and this wave is propagating along positive x-axis. So as displacement is perpendicular to direction of propagation of wave, that's why it is a transverse wave. So Y is displacement of constituent of a medium. A is known as amplitude. Sine, it is a sinusoidal wave. So instead of this sine, you may have cos function. So A cos kx minus omega t plus phi. This also is a transverse wave traveling along positive x-axis. Then K. K is a constant known as propagation constant, or we also use this term wave number. I will explain what is meant by this amplitude, propagation, or wave number, propagation constant or wave number. Omega is angular frequency. Omega is angular frequency. Argument of cos function or sine function. This is argument. This is known as phase of wave. Kx minus omega t plus phi is known as phase of wave, and this phi term is initial phase or phase constant. इस इक्वेशन में A एम्पलीट्यूड है, साइन या कॉस क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन है, K एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, बट ज़्यादा करेक्ट है प्रोपगेशन कांस्टेंट टर्म यूज़ करना. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. साइन या कॉस फंक्शन का ये जो आर्गुमेंट है इसको फेज कहते हैं, और ये जो टर्म फाई है वो एक कांस्टेंट है जिसका या तो इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं. Fine. So A is amplitude, K propagation constant or wave number, omega angular frequency, argument of your sine or cos function is phase, and this phi is initial phase or phase
constant. Now, the challenge you face is, or difficulty you face in mathematical description of wave is, in some books you will find a traveling harmonic wave or sinusoidal wave to be written in this form, and in some other you will find it to be written like a sine omega t minus kx plus phi. Now this and this is identical. There is no difference whatsoever. एक कन्फ्यूज़न जो जनरली स्टूडेंट को होता है वो ये है, कुछ जगहों पे या कुछ किताबों में तुम ऐसा एक्सप्रेशन देखोगे हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव के लिए, और कहीं ऐसा इक्वेशन लिखा होगा. दोनों में अंतर क्या है? यहाँ kx पहले है, फिर ओमेगा t है. इस एक्सप्रेशन में ओमेगा t पहले है और फिर kx है. समझना ये है कि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों एक ही वेव रिप्रेजेंट कर रहा है. You may find wave like a sine kx plus omega t plus phi. So between kx and omega t, what sign you have? Plus. Now the sign between omega t and kx, write it down, sign between kx and omega t decides direction of propagation. Sign between kx and omega t gives us direction of propagation of wave. तो ये जो साइन है ओमेगा टी और के एक्स के बीच का, ये डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पहले के एक्स लिखा हुआ है या ओमेगा टी लिखा हुआ है. इम्पॉर्टेंट ये है कि इस दो टर्म के बीच का साइन माइनस है या प्लस है. इफ साइन बिटवीन के एक्स एंड ओमेगा टी इज minus, that means it is propagating along positive axis. Now which positive axis? As x is written here, so it is traveling along positive x axis. If you write this as kz plus omega t or kz minus omega t, if instead of x you have z, then it is propagating along z axis. Fine. And plus sign means negative axis. Done. So sign between kx and omega t decides direction of propagation. तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर साइन दोनों टर्म के बीच माइनस है तो प्रोपगेशन किसके लॉन्ग है? पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग. और चूंकि यहाँ या यहाँ x लिखा हुआ है तो ये प्रोपगेशन पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग है. अगर इस x की जगह z लिखा होता तो क्या कहते? प्रोपगेशन इज अलोंग z एक्सिस. और प्लस एक्सिस और माइनस एक्सिस किससे डिसाइड हो रहा है? दोनों टर्म के बीच का साइन माइनस है या प्लस है. तो y x t a traveling harmonic wave a sine kx minus omega t plus phi. But instead of this minus sign you may have plus sign, and instead of this plus sign you may have minus sign. Now what is significance of this phi and plus minus phi? I will discuss that part in great detail but later in the course. Done? यहाँ इस माइनस साइन के बजाय तुमको प्लस साइन भी मिल सकता है और इस प्लस के बजाय माइनस भी मिल सकता है. इस प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस? इस प्लस का और इस माइनस का सिग्निफिकेंस तुम जानते हो, उससे पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस डिसाइड हो रहा है. यहाँ पे इस प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है जो फाई के पहले है, ये हम लोग आगे किसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ इन दिस लेक्चर व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज हाउ यू डिस्क्राइब अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव मैथमेटिकली. इन हाउ मेनी वेज वन कैन डिस्क्राइब इट. So you can take help of sine function, and then in argument you need these three terms kx, omega t and phi. Out of kx and omega t, which you can write first? You can write either kx first or you can write omega t first. It does not matter. Done?
इस लेक्चर का पर्पस है ये सीखना कि ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, तुम्हारे पास इस साइन के आर्गूमेंट में कितना टर्म है, 3 है, के एक्स है, ओमेगा टी है और फाई है। के एक्स और ओमेगा टी में पहले किसको लिख सकते हैं, तुमको पता है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। दोनों के बीच का साइन क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इस फाई के पहले का साइन क्या हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और इस साइन फंक्शन की जगह कॉस फंक्शन भी ले सकते हैं। तो इस ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। क्या सारे को याद रखना है? नहीं, तुम किसी एक फॉर्म को याद रखोगे। So this and this is same. Next variation, instead of sine function, you may get cos function, and you can have plus sign or minus sign. And in case of cos also, you can first write omega t and then kx. So these are various ways in which you can mathematically describe a harmonic function. So keep any one form in your mind. Instead of memorizing all possibilities, whenever you come across a term like harmonic traveling wave, so start with this mathematical description: a sine kx minus omega t plus phi. But you prepare yourself for what changes. Instead of kx as being first term, what you may get, omega t will be first term. Instead of this minus sign, what you may get, plus sign. This plus may be minus phi. Done. And another change, instead of sine function, what other function is possible? Cos. You will never face any difficulty. So I am repeating it again. Traveling harmonic wave, whenever you come across this term, you should write this equation: a sine kx minus omega t plus phi. Done? Now, you must be prepared for what changes. Instead of sine, what function you may get? Cos. That thing is settled. Now in argument, which term can be written as first term? Is it necessary that kx should be the first term? No. You can write omega t also. So it can be written as omega t minus kx plus phi also, and both the wave represent same situation. So omega t minus kx plus phi. There is some difference, of course, but those difference we will ignore at the beginning, and later in the course I will explain to you while discussing how we plot these functions. What is the difference between omega t minus kx and kx minus omega t? As far as direction of propagation of wave is concerned, it does not matter whether you write kx minus omega t or omega t minus kx. In either case, as you have minus sign between kx and omega t, your wave is traveling along positive x-axis. Done? And instead of this minus sign, you may get plus sign here, or this plus may be minus. Phi is a constant, mind you, that may be 0 also. That phi may be 0 also. So, traveling wave yxt, I started with a statement that for mathematical description of a wave, what we need? That wave, we need a function which is function of two variables, such that at given time it gives you shape of wave, and at given position it describes how constituent is moving. So a sine kx minus omega t, let us take phi to be 0 at t equal to 0. So at given time you get y bracket x comma 0 equal to a sine kx. So this gives you y as function of x, that is, we get shape of wave at t equal to 0. And if I take x equal to 0, then what you get? A sine minus omega t, which is minus a sine omega t. And this equation looks familiar. This is displacement in case of
particle undergoing simple harmonic motion or not. So this describes motion of constituent, and which constituent at x equal to 0. So motion of this constituent is simple harmonic. लेक्चर के स्टार्ट में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि वेव या हार्मोनिक वेव या ट्रैवलिंग वेव दो वेरिएबल का फंक्शन है, सच दैट कि अगर किसी टाइम t पे y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करें या y एज फंक्शन ऑफ x निकाल लें तो वी विल गेट शेप पता चलेगा वेव का, और किसी x पे उस कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मोशन हो रहा है वो जानकारी मिलेगी. तो सपोज एक ऐसा ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव है जहाँ फाई इक्वल टू 0 है. अगर तुम t इक्वल टू 0 लेते हो तो विल गेट रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x. तो ये रिलेशनशिप आया y इक्वल टू a साइन के x. यहाँ y किसका फंक्शन है? केवल x का. तो दिस गिव्स अस शेप कैसा होगा वेव का. और अगर x 0 लें मतलब हम एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को देख रहे हैं, तो अगर x 0 है तो ये इक्वेशन आया, इसमें x 0 पुट कर दो तो आर्गूमेंट में माइनस ओमेगा टी है और ये इतने के बराबर हो जाएगा. और ये रिजल्ट तो फेमिलियर है. कैसा मोशन है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन. So can we conclude something like, write it down, if a sinusoidal wave propagates in a medium, if a sinusoidal wave propagates in a medium, motion of every constituent of medium is simple harmonic. Motion of every constituent of medium is simple harmonic. So if harmonic or sinusoidal wave propagates in a medium, motion of every constituent is simple harmonic. Done? So क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर साइनोसॉइडल वेव किसी मीडियम में प्रोपगेट करता है तो उस मीडियम के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोशन कैसा है? SHM जो यहाँ से आया था. फिर से, अगर साइनोसॉइडल वेव प्रोपगेट करता है किसी भी मीडियम में तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोशन कैसा होगा? हमेशा सिंपल हार्मोनिक. To end, at the very end, to conclude, this is how we will represent mathematically a traveling harmonic wave. And for what changes you need to be prepared for, instead of kx term, first term may be omega t. Instead of sine function, you may have cos function, and this sine minus may be plus and this plus may be minus. Done? Next lecture, let us do one thing. Let us discuss in detail what is meant by amplitude, propagation constant, angular frequency, phase and phase constant. They are known as parameters of harmonic wave. So next we will discuss parameters of harmonic wave.